So we have to start your 10th chapter, that is Introduction to Communication. What do you mean by communication? Hanji, Gautam, communication? What is the meaning of galba? Communication is how we are communicating with each other, talking to each other, understanding each other's thoughts, views, everything. And yes, of course, exchange of words, exchange of ideas, that is communication, right? So first of all, we'll see the features of communication. So what is communication? Transfer information. Yes, of course. Communication can be defined as a process in which the ideas, thoughts, information and multiple command and requests are shared. Just now I told you, ideas, thoughts, ideas, thoughts, okay? As well as information and multiple communication. You are talking to each other, you are communicating it with each other. Now, for example, you just finished your exams. Okay, then you'll be talking to each other about your exam, how your exam went. Oh my god, ये question छूट गया, ये रह गया, तूने ये लिखा था, ओहो इधर ए आंसर सी, oh my god, ये तो मेरा formula गलत हो गया. For example, you are communicating with each other, you are sharing your thoughts, ideas. ठीक है, you are reciprocating to each other. ठीक है ना? Reciprocating means इन्हें मैंने कामिनी ने दसा मेरा ये रह गया, ओहो ये रह गया, मेरा तो ऐसी का. We are reciprocating to each other, right? The process highly focuses on the transmission as well as understanding the message with confirmation in form of feedback. Yes, of course, feedback. Because you are reciprocating with each other, you are communicating with each other. तो हानू पता लगेगा कि हाँ मैं गल कर रही हूँ, वो गल कर रही हूँ, ठीक है ना? Because your ideas, thoughts are being shared with each other. So that is the basically communication. Just now I am communicating with you. I read out, I make you understand, then मैं अपने वालों की कुछ ना कुछ दस दूँगा. So that is communication. I am sharing my thoughts, my viewpoints, my examples with you. Communication is a way that one organization member shares meaning and understanding with another. This is the definition given by Qantas and O'Connell. JDB definitions ने always mark it, underline it. MCQs which आ सकते हैं, ठीक है? So what is saying? Communication is a way that one organization member shares meaning and understanding with another. Meaning and understanding, your thoughts, words, processes, whatever is in your head. Communication is the process of passing information and understanding from one person to another. Same cheese. Next, Keith Davis ने कही है. Third, communication is the sum of things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. ठीक है ना? That communication की है one person tries to communicate his thoughts, ideas with you. I am trying to convey my thoughts, my ideas, my examples with you, right? It is a bridge of meaning. Of course, bridge की होता है पुल. जो पुल बनया होता है तो पता होता है ना, हम जिस तरह इधर पुल बने हैं, तो कहोगे मैं इधरों बाइक लेके जाऊँगा, मैंने इतना किलोमीटर आसानी पड़ेगी. It is a bridge. Bridge means एक जगह तो दूसरे गैप ਨੂੰ कवर करना है, ठीक है? सो ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੁੱਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਜ ਗੈਪ ਵਿਚ ਕਵਰਸ ਵਨ ਪਾਰਟ ਟੂ ਵਿਚ ਕਨੈਕਟਸ ਵਨ ਪਾਰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਿਜ ਆਫ मीनिंग अंडरस्टैंडिंग. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਦਾ ਹੈ. I am conveying my thoughts to her, she is conveying her thoughts to me. Like just now I gave that example that they went for a wedding. Every day I was getting information about what all is happening, who is doing what. She was sharing her thoughts, views, ideas and pictures with me and asking me to comment, right? Even on her dresses, whatever, each and everything, ठीक है? It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling. Yes, of course, systematic way होता है. System जब तक ना होवे कुछ नहीं हो सकता. Systematic and continuous process of telling, दसना, listening, सुनना and understanding. Of course, ਤੁਹਾਡੀ अगर understanding नहीं कुछ भी नहीं चल सकता. ਤੁਹਾਡੀ communication gap हैगा ना, ये हर रिश्ता खत्म होता है, ठीक है? communication strong है, कोई रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, है ना? बोलो हाँ, करते रहते ना आपस में communicate. ए आ जाती विच no communication, ठीक है? समझ गया?
Now what are the features of communication? बच्चे इतने स्क्रीन उठे नहीं है. मेरी काफी बड़ी बैठी लिखने आना. Communication is integral part of human life. Of course, communication is the most basic, integral, important part of human life. अगर साडी communication strong नहीं है, if I am not able to convey, you will not come. अगर मैं आके सिर्फ read करता communication is integral part of human life, from retentive to requesting, हो गया जी. You will never come the second day. You will say ऐसे भी पढ़ सकते हैं. You can read English. You need not somebody to guide you. Need not somebody to tell you. If I cannot communicate my thoughts, I cannot make you understand the meaning in different ways. अलग अलग तरीके ना तो हम किसी चीज़ का मतलब समझानी है. If I am not able to do it, if I am not able to communicate, you will not come. You will say ये पढ़ना मैंने भी आंदा है. ठीक है, Google है का मैं समझ रहा हूँ. Why do you need somebody? Because that person is communicating his or her ideas with you to make this understandable. कोई समझ सकता. Understood? From directing or requesting, no existence is possible without. अगर तुहानू कोई भी गल समझ नहीं आती है, डायरेक्ट नहीं होती है, रिक्वेस्ट नहीं होती, कोई एग्जिस्टेंस फॉर्म नहीं हो सकती अगर तुहानू कोई गल समझ ना आए. It is a continuous process. Of course, it's a continuous process. Communication is always continuous. If there is no communication, there is no relationship. Even between friends, हो रही ना कोई relationship में फालतू मीनिंग काट लो. Even between friends, if Sukh is not communicating with her group seems dumb. ठीक है, she needs to communicate every day. Master of communication. ठीक है ना? Doctorate of communication, PhD in communication. ठीक है ना? पूरे group they have done PhD in all type of communication. So, of course, it is a continuous process since birth till death. Even when you are born, you are communicating. How? हाँ जी, गौतम. When you are born, जब तुसी पैदा होंदे हो, that time also you communicate. How? Very simple answer. इशारे ना. गौतम. बहुत जोर से थप्पड़ आएगा. हाँ जी. शालिनी वो नहीं है, शालिनी इत्थे है. हाँ जी. When you are born, you communicate. How? Tell me. वो तो उन्हें क्या ना इशारे ना. You are not to repeat it. विशाल टीचर. बच्चे you were born, don't forget it. And it yes, she is absolutely right. Okay, roke, you cry, you communicate. Everybody comes to know the child is alive. बच्चा ना रोवे कितना पूरा हॉस्पिटल परेशान. बच्चा तो रोया नहीं कितने परमात्मा ना करे. ठीक है ना, ताकि डॉक्टर पीछे डालने दे 2-4. गौतम ने सर तो पढ़िया सीगा. पल्ले तो थोड़ी पढ़े सारे ने. यार ये डॉक्टर ही पढ़ता है. He was folded like this. गौतम yelled. मैं तो पहले ही रो गया. वैसे ही मैंने करवा के दिखा दे. ठीक है. ठीक है. So डॉक्टर ने देख के चुप हो. डॉक्टर ने देख के रूम छाड़ के भज गए. यार ये हट. So you cry. The moment you are born, you are communicating. You cry, and everybody knows the child is. वो the lungs बिल्कुल air pass हुई है. Everything. The child is परमात्मा ही दयाना alive. ठीक है? Because that is the communication form which you tell. As soon as you are born, you are confirmed. Takes place. Even when the person dies, सब कुछ communication होता बंद. सब कुछ बंद. We come to know the person is no more. Understood? From birth till death, you are communicating. You, me, everybody, we are communicating from birth till death. Communication is commonly in two-way process, even when it is a form of intrapersonal interaction. What is intrapersonal interaction? Hanji Sukh. Intrapersonal interaction. Semester 1, chapter 3. What is personal? ठीक है ना, पर्सनल रिलेशन. ठीक है ना, इंट्रापर्सन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. ठीक है ना, आई ऑल्सो शेयर अ पर्सनल बॉन्ड विद यू. बेशक स्टूडेंट टीचर. ठीक है, हंसा भी देनी तो हम. इट इज अ पर्सनल बॉन्ड. आई एम नॉट लाइक दिस. आया लेक्चर ले अच्छा चलेगा. आई मेक यू अंडरस्टैंड कभी हंसा भी ले. सो इट इज इंट्रापर्सनल. आई कम्युनिकेट विद यू. ठीक है, मेरे थॉट्स प्रोसेस थोड़ा हंसा लिया थानू, थोड़ा डांट लिया. तो इंट्रापर्सनल ताकि बच्चे का इंटरेस्ट भी बनया रहे. ठीक है. Communication is a two-way process, even when it is a form of intrapersonal interaction. One acts and the other reacts. One acts and the other ha 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 reacts. ठीक है?
One shares and other reverts. One shares, I share and you revert. Oh ho मैडम इवे अच्छा जिਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਵੀ ਹੱਸ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਵਰਟ ਹੋਇਆ ਰਿਵਰਟ ਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਬੈਕ ਕੀਤਾ Communication is a rational process which serves a purpose every time it is used. It's a rational process. Rational की होता है? What are rational numbers? Accounts, math teacher. Rational number किहड़े होंदे ने? गौतम. नहीं हैगा अकाउंट्स वाला हाँ जी anybody tell me. Rational number किहड़े होंदे ने? ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ कल सोच रही बस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर ठीक है ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं communication is a rational process which serves a purpose every time it is used rational ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ correct ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ it is rational ਬਿਲਕੁਲ correct ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ which serves a purpose every time ਹਰ ਵਾਰੀ whenever you are communicating you serve a purpose ਇੱਕ purpose ਹੀ ਹੁੰਦਾ communicate ਕਰਨ ਦਾ for example you go to the market you go to a ਕਿਰਿਆਨਾ shop ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ 1 ਕਿਲੋ ਪੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ ਲੇਗਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ you will have to communicate ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਰਹੇ ਪੈਸੇ you will give him money he will give you back the money you will count it ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ for example ठीक है ना you will communicate that's a rational process you are doing it ठीक है every time it is used every time किते भी तुसी जाना हो you are communicating with each other you are communicating with your teacher you are communicating with friends you are communicating in the market so it is used every time sometimes the motive could be sharing information I am sharing this information with you information to others other times it could be for passing the time as well ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੈਸ everybody ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ठीक है ना सारी कर ली तो किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लिया सारे कर दे ठीक है ना ओके व्हाटएवर टाइम पास एज वेल द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जनरली रिक्वायर्स 2 पार्टिसिपेंट्स दो जने जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं 2 वे प्रोसेस होना चाहिए ताकि वो रिलेशनशिप बढ़ता है 2 पार्टिसिपेंट्स one is the sender of the message and other is the receiver sender होने जिस तरह मैं कल नहीं आना सीगा कम्युनिकेट किया ठीक है अपने आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਆਲ ਵਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖ ਗੇਵ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਗੇਸ਼ ਡਾਂਸ ਵਿਦ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹਮਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਈ ਲਾਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡਤੀ ਉਹ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸੋ that was communication from one person received to other person and distributed among all ठीक है if one is missing then no interpersonal communication takes place intrapersonal कदों नहीं होता if even one is missing if one person is communicating दूसरा जवाब ही नहीं दे रहे हाँ टिक लगा दे तुसी WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਗਲਾ ਸਿਰਫ thumbs up ਭੇਜ ਦੇ ठीक है हाँ ठीक है हाँ that means he is not reciprocating in the right manner you need to झंझोड़ो him हाँ भाई मैं ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚਿੱਠੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ and you just do not revert back you just send a thumbs up or something like that why don't you communicate in a better way ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ then communication starts in a better way now what are the types of communication ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ verbal and written what is verbal ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ and written ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਗੇ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਮੀਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਕਰੋਗੇ that is written ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ मैं क्या हौसला ना था be quiet now what is verbal communication when you are talking to each other verbally
Verbal communication is the type of language which the symbols are utilized so that one can transmit his ideas and thoughts to others verbally. Even sign language. जिस तरह थल्ले तुसी सारे बैठे होंगे हो, ठीक है ना, सडनली उसी सर उत्ते चले गए, ठीक है, ए किथे हैगी, ए नहीं हैगी इत्थे, आजो 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 जो बाहर खेल रहे हैं या पिछली साइड से स्कूटी के उत्ते बहने हैं, ठीक है ना, एंड उत्ते चिट चैट करते हैं, देन वो तो देखेगी शील से कि हाँ इधर क्यों बैठे हो. सो दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन विच यू डू आज इधर में बहने, ठीक है ना, वैसे भी आपस में गल्लां करनी है, दैट इज़ वर्बल. By following the process of communication, one sends the message to the other and one reverts to the first, creating a chain of communication. How you are creating a chain of communication? What do you mean by chain of communication? Chain of communication was created yesterday. One person sent the message to the other and chain was created. अपने अपने ग्रुप्स से अपने अपने फ्रेंड्स ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ. ਚੇਨ ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਮੈਸੇਜ ਸੁਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ, ਉਧਰ ਭੇਜਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਹੋਲ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ. ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ. This can be further divided into sub-categories. ਅੱਗੇ ਵੀ categories ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ of communication. Written communication is where the interaction takes place in black and white on paper. Black and white, pen and paper. We always say black and white. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਸਫੇਦ. ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, okay, you have to say no, give it in writing. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ. ਲਿਖਤ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ. ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ, give it to me in black and white. लिख के दे, this means that, ठीक है, on paper or in ink. Here the sender of the message uses the language in written form. Sender of the message uses the language in written. WhatsApp देते message in written form to communicate with the receiver. A fine example is sending a message to a friend on social media. Just now I told you, social media, WhatsApp. मेरी हिम्मत नहीं सी कि सर ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ. I send the message on WhatsApp, ठीक है ना. श्लोक नहीं सुन रहे सी, मैं सर नूंगा, सर मैं नहीं है, सिंपल व्हाट्सएप देते पाता मैसेज, फॉर एग्जांपल 10 नंबर, ठीक है. A fine example is sending a message to a friend on social media. Earlier people used to write letters to each other. पहला लंबे लंबे चिट्ठे होंगे सीगे. आज दी डेट जो है नहीं, आज दी डेट की है, हाय सुख, मैम नॉट कमिंग, लेट्स पार्टी, ठीक है, फ्रॉम योगेश, बस उतना ही बहुत है. मेन्यू विद कम, उन्होंने मैसेज किया, बस खुश सारे, ठीक है. In present scenario, what do you mean by scenario? Present times, present situation. Scenario means present time. In present time, communication is the form in emails, articles, WhatsApp, पता नहीं की कुछ हैगा. I always use WhatsApp or Facebook to communicate. मैं जिन्हों जो कहना Facebook and WhatsApp. I don't use other media channels to communicate. I don't like वैसे ही रखा हुआ है Snapchat and what else, Insta and all. But I use it once. कभी होया नहीं तो मैं तो Snapchat, Instagram खोल के भी नहीं देखती. I always use WhatsApp and Facebook to communicate with everybody. Now, oral or spoken communication is where the language is utilized in a vocal manner. Whenever the language is used in a vocal manner, whenever you are speaking, तुसी जदों बोल रहे हो, the sender of the message prefers his voice as a medium of interaction. ਜਿਹੜਾ sender ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, medium of interaction ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, वो बोल रहा. If I don't speak, ਹੁਣ ਮੇਰੀ voice ਜਿਹੜੀ modulation ਹੈ, voice modulation मतलब आवाज़ ਨੂੰ किस तरह कंट्रोल रखना, ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਇੱਥੇ. ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਖਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼. ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ voice ਕਰਾਂਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ. But voice modulation should this way कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਫਟਣ ਕਿ ਆ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਾ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. So voice modulation is a very basic thing if you want to become a good orator. What is orator? ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਟਾਈ ਸਭ ਦੀ ਹੋਏਗੀ. ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਲਾਈਕ, ठीक है, जो बहुत कुछ बोल देते हैं फेसबुक पर, डोंट फॉलो, ठीक है. नेवर गो बाय माय वर्ड्स ऑन फेसबुक. बहुत प्रवचन देंगे, बहुत ज्ञान, I don't follow. So, in which sometimes interaction is between two people, voice, so that a person can understand.
It happens when two people interact face to face or telephonically. Face to face, we are interacting face to face. ठीक है, telephonically. Yesterday message was sent telephonically, interaction होया सीधा. ठीक है ना, but communication होगी सी. ऐ नहीं कि तुसी सारे हैं मैडम नहीं आई. ठीक है ना? You all got the message that she is not coming. Wow, great, hooray, party. ठीक है? As an example, we can focus on scene where one is in conversation with a friend or someone sitting next to him, or when you receive a call from anyone known and you share your heart and mind with that person. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. You share your heart and mind. Heart ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. You share your heart and mind. It can be with anybody. It can be with a good friend also. ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. You share your thoughts, feelings, heart and mind with that person. ਕਿਸੇ person ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ closeness feel ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ person ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ person ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ close ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ I want to share my thoughts, words and ideas with him. I want to spend time with him. ਹੁੰਦਾ ਹੈ, right? So you telephonically, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਟਰਡੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, so that you will come to know each other better. Otherwise, how will you come to know each other better, right? Now, what is non-verbal communication? Non-verbal communication is a type in which the speaker or the sender of the message delivers a part of the message through gestures. What are gestures? जिस तरह मैं करती रहूँगी. Body movements, how you are talking. Body expressions, things like how one stands. किस तरह person खड़ता है, ਤੁਹਾਡੇ सामने किस तरह खड़ा होता है, वो भी बहुत मायने रखते हैं. अगर कोई ऐ हो जाए, that means he's crossed. He doesn't want to communicate. He doesn't want to accept your ideas. वो अपनी सुना रहा है, ਤੁਹਾਡੀ नहीं सुन रहा. Things like how one stands, sits, moves, shake hand movements. मेरा हमेशा इस तरह ही चल रहा होगा, because I'm delivering something, I'm telling something. If I'm like this, no, always a no. If somebody is like this in front of me, I always avoid that person, because I know that person is not communicating with me properly. Or sometimes if I'm talking, the person is busy on the phone, looking here and there, eye contact me, I always avoid that person. Tata bye. Whenever you are communicating, look straight into the eyes. पर ऐ नहीं कि don't stare at the person. अच्छा काम ही नहीं, वो डर ही जाए, ठीक है ना? वैसे ही मेरी अक्खां बहुत बड़ियाँ बड़ियाँ, people get scared, ठीक है? So whenever you are communicating, always look at the person face to face, look into the eyes. बढ़ना है, don't stare. मैडम ने कैसे look into the eyes में घूरना जाके, ठीक है? No, ठीक है ना? कल लूँगा. She is also working now. गुलशन सर, मेरे को ये बात समझाना ज़रा. सर कहें बेटे ऐसे क्यों, मैडम ने कहा था, मैंने उसे तरवा दो. सर कहा था तू आ थले, मैं तेन मैं दसदा, ठीक है? So just look, just communicate by looking, but don't stare. Face to face interaction, don't be crossed, never be that. It is a big put off. Some people like me, person like me, I just don't like. जरा ऐ करके बोलता है. No, I never interact with such people. Second chance ही नहीं तो interaction में. Always be open to communications. Okay? Next is shakes his hand movement, his clothing, his sense of personal space. Clothing ਦਾ मतलब है कभी नहीं होता कि किसी कपड़े पाए आप तो टिचना खरीद. No, the person may not like it. हर person ज़रूरी नहीं है बहुत महंगे कपड़े अफोर्ड कर सके. Person like me, मैं चौड़े बाजार तो सब तो सस्ता कपड़ा खरीद के पाऊँ. I can't afford. तुसी एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीद सकते हो, मेरे वर्का संडे सेल तो खरीद के लेना, ठीक है? 250 की है कि 500 की चीज़ हम मारे बहुत है. 220 रुपये के सैंडल मैं ए पूरा साल चला लूँ, मतलब पूरी गर्मियां काट लूँ बस. ब्लू कलर के शूज़ पहने पिछले साल भी है तो देखे ने सुखने, वो मैं पूरी सर्दी चला लूँ. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्लोथ, पर बस सस्ते खरीद लें. 5000 का एको बारी खरीद लिया वधिया जा कपड़ा, फायदा की दोबारा ना खरीद सको. वही 5000 10 कपड़े आए, ठीक है? सो never judge a person with the clothes he or she is wearing.
if anybody judges me according to my clothes, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ what type of person I am. Never judge person by the clothes. Don't say female, male and female. Male also can get offended. Boys ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫालतू ਪਿਕਚਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ। Boys are very emotional, more than girls. ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਲਸ ਤੇ ਚਲੋ ਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਬॉय ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬॉय ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਨੋ, ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਵਰ ਜੱਜ ਅ ਪਰਸਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲੁਕਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਵਰ ਡੂ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ? ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਹਾਈਟ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਹੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਹਾਈਟ ਸੇ ਐਵਰੇਜ पे ਚੜਾਉਣਾ ਮੇਰੇ को, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਟ, ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਹੋ, आई डोंट लाइक। अरे ये तो बहुत मोटी है, अरे ये तो बहुत पतली है, तुम की लेना, तेरे को तो खानी है, ये तो बहुत बातें करते हैं, बोल के दिखाओ कुछ मैंने। ठीक है, बट बॉडी शेमिंग इज ऑल्सो वेरी 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 बैड। दिल करता सामने वाले ने धर के दवा कि पहले आप नूं देख लै फिर मैनूं कह। ठीक है ना, सो डोंट डू दैट, इट इज़ अ वेरी बैड सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। रंग, ठीक है, पर्सनली ना लो, रंग के उत्ते कभी नहीं कमेंट करना चाहिए। रब ने बनाया जिस तरह भी बनाया, हथ पैर हैगे ने, आप काम कर रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, साढ़े को ब्यूटीफुल माइंड है। ठीक है ना, you've got beautiful minds. Always tell a person, जब मैं किसी ने communicate, you've got a beautiful mind, face to face। ठीक है, see a person according to his ability, talent। मेरे अंदर talent है बोलने का, जिन्ने मर्जी लोग हों, आई कैन कम्यूनिकेट। हुण मैं नहीं, हाइट मेरी छोटी है, की लेना देना। इफ आई एम अ गुड कम्यूनिकेटर, आई कैन कम्यूनिकेट विद लोड्स ऑफ स्टूडेंट, लोड्स, लॉट्स भी नहीं कहना, लोड्स, राइट। आई कैन इंटरेक्ट लुकिंग आई टू आई, चाहे मेरे को और 50 बच्चे बिठा लो, आई नेवर फील शाय। मैंने शर्माना वरमाना नॉनसेंस नहीं आता। आई एम अ वेरी ओपन पर्सन, ओपन हार्टेड, जो हैगा मैं बोल देना। ठीक है, सच पीपल आर ऑलवेज लुक डाउन, अच्छा नहीं समझा जाता, बट आई डोंट केयर। सो बॉडी शेमिंग कभी ना करो, नेवर अब्यूज अनदर, दैट पर्सन मे टेक इट एज एन अब्यूज। So clothing, his sense of personal space and all such things come under category of non-verbal. Sense of space, what do you mean by sense of space? Give the person space, give the person time। ऐनी कि 2-2 मिनट बाद कॉल करके ऐसा कितने जा रही है, अच्छा तो इतने आ गई, छेती है ना सेंटर से, मैं वेट कर रही है, रोटी खा ली, पानी पी लिया, बट नॉनसेंस, बाकी भी पूछ लिया करो। ठीक है ना, सो गिव दैट पर्सन स्पेस, उन्होंने भी जीन दो अपने स्पेस। I also feel very bad if somebody asks me all these type of questions. I don't like it. Okay. Next is how a person sits, stand, moves, shake his hand, movement, clothing, sense of personal space, and all such things come under the category of non-verbal communication. Without saying much, one can deliver a lot to others through his body and expression. Without saying much. कई बार कहते हैं ना, आप देख के किसी ने, इस तरह मैनू देख के, कोई कपड़े देख के बोलिया कुछ नहीं, पर बूथे नाल दसदा ना कि नहीं अच्छे कपड़े, मतलब बूथा तोड़न दी जरूरत करदा है, तोड़ दी मैं कहनी है। होया सी परसों, आई टोल्ड यू ना कि माय आंट डाई, आई वाज वेयरिंग दैट ब्लैक टी शर्ट, मैं तो उन्हीं कपड़े से गई, मैं तो चिट्टा बेटा, आई हैव नेवर वोर्न वाइट, आई हेट वाइट, आई डोंट लाइक वेयरिंग वाइट। सो वन ऑफ माय अंकल्स मैंने देख के दोनों देखे, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हो गया, उन्हें मैंने दिखाता, मैं उन्हें दिखाता, काम खत्म। ठीक है ना, आज काम बस उन्हें ही बड़ा ऊपर करके आइए ना। एग्जाम्पल is how a mother understands whether the child is in good or bad mood, if he is irritated or happy, whether he has done something wrong or not, if he is lying। कई बार मदर्स समझ लैनी है, थोड़ी तो मदर्स है अपनी बहन गई, ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
अच्छा ये ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਜਾ धैड़ ਹੁੰਦੀ है ना ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਮਾਮੂ ਮਾਮੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਨੀ मेरे नहीं अच्छा नहीं पता लगता हमें पता लगेगा ठीक है ना अब कामिनी बाहर से ही लड़की आई है रोहिणी के 2 लगा कर आई है रोहिणी ने बहुत ही माल मस्ती अंदर तय करके गई है पर अंदर पता लग जाता है यार फिर धैड़ कर दिया है ना आपस में लड़ पड़ी कर दिया नहीं थल्ले जाऊंगी ना और मैंने इन्ने किस्से सुना देने ठीक है सो मैं तो नाम भी नहीं लिया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही हुई है ठीक है ना तो एक और एग्जांपल है वैसे तो सारे ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਣੇ ਘਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ I myself I was a very naughty child ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ naughty ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਾਮ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੈਗੇ ਨੇ 2-4 ਰਾਮ ਟਾਈਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ I was also very naughty child you should be naughty don't be wrong types ठीक है so that is non verbal expressions now mothers come to know ठीक है ना कि बाहर हाँ भाई आज विशाल चार ਨਾਲ लड़के आया शाम ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਘਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ठीक है ना so all this happens ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਸਰ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਯਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਸਟਰੀਟ ਫਾਈਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠਾ ਸਾਰੀ ਸਟਰੀਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਸਟਰੀਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ now some other examples are also there example of first ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ how mother now following types are continued under non verbal ਕਿਹੜੀ ਨੇ promoxis when basically one concept of personal space ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ personal space ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ it depends on person how wide his personal space criteria and how when whom he feels comfortable with if someone enters that space ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ space 'ਚ ਕੋਈ enter ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ life 'ਚ ਕੋਈ enter ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ comfortable ਹੋ nagging person अगर कोई nag करे I had a friend she used to nag me I left her टूट गई कितने हैं location page I said what the stupid things you are asking me I don't need to give you explanations of what all I do so she would always come to my home every day and ask about me I didn't like it so I left her I don't need such people. Give me my time, give me my space. I need not explain everything. मैं की कर रही की नहीं मतलब कर दिया दस दिन who the hell are you? My people at my home they do not know everything about me. तू कौन होगी? Simple as that. I am very different. Only. ठीक है ना? So don't let the other person enter your space. हाँ कितने जा रही की कर रही है कदों पहुँचेगी सेंटर पे उन्हें राज कितने तक पहुँची है ठीक है ना? I don't simply don't like. So don't let a person enter your space too much. That is your space, your own life, your own lifestyle. Right? Now facial expressions depicting the feelings and emotions. Of course, facial expression. तो देख के कोई मुंह बनाता है तो देख के कोई स्माइल करता है हाँ सुखा ही है ठीक है वो खुशी है सुखा ही है ठीक है तो facial expressions. अच्छा गौतम इधर जा रहा सी अच्छा गौतम इधर क्या सी ठीक है सो दैट इज डिफरेंट ठीक है ना हाउ यू रिएक्ट ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕੈਟ ਫਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ठीक है ना नहीं आ गई मेरे बता से रोहिणी आ गई है उगेश और रोहिणी उगेश बैठती थी यहाँ उगेश बैठती थी यहाँ शालिनी को फर्क ही नहीं पैदा मेरे लिए सारे बराबर So facial expressions, face, ठीक है? Depicting on the feelings and emotions. Paralinguistics, which underlines the message through changes in tone, pitch, inflection, and volume. Of course, this is a very important word. Paralinguistic. Pitch, हुने जो मैं करके दिखता. Pitch. What are you doing? ठीक है? What are you doing? Pitch change होगी? How are you? How are you? Change होगी ना? So paralinguistic. You went to the market. So this is paralinguistic. How you are changing. Interesting लग रहा है topic. How you are changing your tone. सुख कल्ली गई सी राजू स्वीट्स से. अच्छा सुख कल्ली गई सी राजू स्वीट्स से. इतनी हिम्मत.
अच्छा सच्ची गए सी आई वेंट आई हैड टू गिव पार्टी ऑन फ्राइडे टू हरदीप एंड गैंग आ गई सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਰਾਜੀ ਸਵੀਟ ਕਾਜਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਲੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਲੀ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਮਾਨ ਸੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ what are you doing so this is paralinguistic how you are reacting changes in tone pitch inflection and volume भी volume is very important अगर मैं कहा की गल है उत्थे जाने दी की लोड़ सी वॉल्यूम बढ़ गई ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਮੈਡਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹਾਊ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੋਲਿਊਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਤਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ मतलब वो तो 6% ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਢਵਾਉਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਤੁਰਦੀ ਬਣ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ अब मैं कहूँ सुख पे अटेंशन टू मी तो पे अटेंशन सुख पे अटेंशन टू मी मैं तुरदी बन मैं इधर बोल रही थी मैंने पता है बड़ा मैं कोई तो नीचे लिसन लिसन ना सुख कुड हैव सीन तेनु बड़ा पता है पर अभी से there is a way how you communicate especially with your peers friends ठीक है your elders not me I'm not elder I'm budi much more elder expiry date somebody called me by this thing is the Aadhaar card with expiry date ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 1961 ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਸੋਚੀ 1961 anyways so you can quote out मैडम एक्सपायरी डेट तो भी गई मैडम एक्सपायरी डेट तो भी गई so this is your volume tone pitch understood gestures are the signals to correspond and are generated through body parts like thumbs up I don't like WhatsApp पे कोई thumbs up भेज देना दिल करता जाके ठीक है to show appreciation अच्छा अपने वालों appreciation show होती है sorry I don't know right but thumbs up ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ you can also राइट अलाइनमेंट है ना तो हम पर्सन एडा लंबा चिट्ठा लिखा है जो थम्स अप करना ठीक है हाइपोटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ टच विद वन टच मेनी मैसेजेस आर कन्वेड गुड टच एंड बैड टच ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਚ ਬਚਪਨ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਗਰਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ठीक है अगर बुरे तरीके नाल दैट यू अंडरस्टैंड इवन बॉयज नाल भी होता है इट इज नॉट कि बॉयज आर स्पेयर्ड बॉयज नाल भी होता है अगर मैं पैट करा मैं गुड बेटा विशाल गुड यू हैव डन गुड ठीक है अगर बैड पता लग गया गुड टच एंड बैड टच artifacts are the accessories which mark the personality of the user and conveys a lot about that person ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ artifacts ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ communication ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ how you are looking at that person ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ I always look in your eyes ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ अगर मैं जिस तरह उदेश आई अच्छा ये बात है what is nonsense I should just look in the eyes okay उदेश आई हाँ बेटा दसो अच्छा अच्छा ऐ गल सी this is the thing I should look in the eyes and need not पूरा that is wrong bad I don't like it at all this the worst part पूरा ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੁక్స్ ਕਰੋ ਬੁక్స్ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾਟ ਅ ਪਰਸਨ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗਣੀ ਤੁਹਾਡੀ